Hello my dear ones, I am Jalpa Madudia. In this video, I will explain how to install WPS Office in mobile. So first of all, click on the App Store. If you have Android phone, then click on the Play Store. Here in the search bar, type WPS Office. Here you can see WPS Office. Click on the download. वेट फॉर अ वाइल, हमारी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो रही है। Okay, it is download. Now click on the open button. Click on the allow and click on the agree button. This is your WPS window. WPS Office is used for Word presentation, PowerPoint presentation, spreadsheet, PDF and doc scanner. In next video, I will explain how to create document file in WPS Office and how to save this file. यही चैनल में मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।